the fight against Kala Jar by developing Dumka model, converging elimination drive with development agenda for endemic villages. She is credited for creating livelihood for women in Pahadia tribe, training and upgrading skills in manufacturing of palm leaf products. She has also started mobile medical units for early identification, TB cases in rural areas, malnutrition in children, women, high-risk pregnancies, etc. She started several innovative campaigns for COVID management. Why I introduce her first and not the topic is for a reason. That all these 4 district collectors that you see today, that we are privileged to have on our panel today, are those who have done exceedingly well in what is called the Aspirational District program, launched by Government of India, Niti Aayog to be more precise, in 2018, under the direct supervision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. Recently, when the UNDP applauded the great work being done and how this model has brought about transformative changes and termed it the Aspirational District program as a very successful model of local area development that should serve as best practice for several other countries where regional disparities in development status persist for many reasons. We all know the skewed nature of development in India. So there is this rural and urban divide. There is multiple other kinds of divides that we see. And it is to address this disparity and lopsided development, so to say, that Prime Minister in 2018 said that we must have a program focused on those districts which are laggard, which are left behind for whatever reasons. And so 112 districts across 27 states were selected. You know, Sam, I don't know if many of you would have heard of district like Kifire in Nagaland, Chandel in Manipur, you know, Jammu in Bihar, and Sirohi in Rajasthan. That is the length and breadth of the kind of districts across 27 states that were selected. And naturally, the mandate of driving the special focused program was given, the onus was on the district collectors. We shall hear from these very bright officers as to what inspired them, what's transpired and what inspired them to bring about the kind of changes that we see today, leading the UNDP. And before that, many Harvard professor also, if I remember, Anis will reflect more on that. And multiple other agencies have applauded this model. You are the flag bearers of change that we finally see. And it is such a delight to have you amidst all you bright young IAS officers to listen to your perspective. We have with us a large number of participants who have joined on Zoom here. There are many friends who are watching us live on our Facebook page. Bureaucrats India is available on Facebook, Twitter, Insta, and we shall start the deliberation now. We shall begin with Rajeshwari. Your thoughts, your experiences, and how did you go about implementing this program? What were the challenges, and how did you overcome these to bring out about the kind of results that has led everyone to sit down and take note that, okay, things are changing here. Over to you, Rajeshwari. Thank you, sir. Good evening, everybody. I would like to first of all thank Bureaucrats India and Niti Aayog for hosting this and giving us an opportunity to talk about our experiences, our learnings, and what we were able to achieve. So when transforming Aspirational District and transforming India started in 2018, I remember there was this connectors conclave. And this was chaired by none other than Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. And all of us collectors from these various 27 states in these aspirational districts were invited for that conference. And there was a very elaborate discussion on why things are the way they are in these districts.
from LWE to many other issues, there was a detailed outlining of why this program was necessary. And I remember even the state heads, most of the chief ministers also were in that conclave. Ministers of the respective departments were in that conclave. And I think it was the first time when collectors were given that kind of an opportunity to meet the heads of the nation at that level. And it kind of gave us an idea about what this program is going to be. And some of us were lucky enough to even give a presentation. There are various sectors which the aspirational program addresses, and we were given an opportunity to present in front of the Prime Minister. So when the program started, it was quite overwhelming to kind of be addressed as a backward district, one of the worst performing districts, specifically with Jharkhand having, I think, nearly 19 districts in the aspirational district program. The state itself was seen as one of the most backward areas in the country, and initially we all were trying to understand why the situation arose. But then we took it up as a challenge, and most importantly, the way the whole program has been framed, especially for collectors, this is like a guiding document for us, because collectors, the job profile of collectors has been expanding. It is very exhaustive, and it becomes a little difficult for us to focus on certain things, certain areas. But when such a program comes in where there is delta ranking, there are specific sectors, there are indicators in each of these sectors, then it kind of gives you an agenda to work with. Otherwise, we are usually reviewing things, we are trying to make things happen, but somehow with the people working in silos, with the various departments working in silos, I think there was something amiss in the way we used to work with regard to developmental parameters. So aspirational district program kind of gave us a coherent aspect, and definitely it empowered us to get things organized. We were able to pass on the message to the lower level functionaries, and because of the competitive nature of the program with delta ranking being given out, I think the most important was even the field workers at the lowest level on ground, they also got an idea that what we do is serious business. So we started going till the last person. If I remember when we started aspirational district, the ANC percentage in my previous district was around 43%. And in a matter of 2 years, that came above to 70%. So definitely we came to know that what we are doing is the right way to do it. And the team got the message that now there are people who are going to check out what we do. So we started holding people accountability, which is not there in the routine way we work. But when it came to aspirational district, because there was a scheme of things that were laid for us, we knew what was to be achieved. We started holding people accountable, responsible to what output they are giving us. And this message flowed through the team, and the team was quite motivated to work under this program. Apart from this, the other major, I think, benefit for us collectors was to start with initiatives and do something new. Mostly, many people do not want to do this because when things start off and there is a change in tenure and somebody else steps in, usually things take a backseat and they are just left in a limbo. As they say कि बहुत धूमधाम से चीजें शुरू होती है लेकिन वो sustainable नहीं होता है. So, but somehow collectors were more into how to get things institutionalized, getting it done systematically so that it doesn't go away with them. So we were able to work with those kind of initiatives that could make an impact and for a longer time too. But then again, the challenge is what happens once once that initiative is taken back, because there are funds involved, there is manpower involved, and when you see that this cannot be a long-term thing, you have to do it on a short-term basis, then that's when we started applying ideas of how to make things lasting and how to make them systematic and institutionalized. The third, I think, most important aspect of aspirational district program was that we even were able to get funds, which is a huge, I think, setback for certain districts.
It's very recent times that district collectors have started getting an untied fund at the district, to the tune of say 1 to 3 crores per year. But then when you add it with developmental performance and getting in funds for a district because of some good work on the field, then that's really a huge motivating for the team. And you have your own funds where you can, and also where you need to put them. You have both on your platter, so you can plan better. You can invest in things that really need to be taken care of. For example, in Dumka itself, till date, we have managed to get 10 crores, which is huge for a district like Dumka. Because there are so many ideas, so many projects that one wants to go along with, but then you are caught up in that fund issue. So getting funds also was another plus point for us, and using these funds, we are taking up some really serious projects. Like I mentioned in my profile, the Kala Azar elimination program. There was no Kala Azar in the previous district. Ramgarh is not an endemic district. But in Dumka, Kala Azar is a major issue. It is an endemic district. We have 51 villages which are Kala Azar endemic. So these 4 districts of Jharkhand are facing Kala Azar, and there is an elimination drive. It was to be eliminated in 2010. We surpassed that. 2015, 2020. Then COVID happened. So now it is 221 to eliminate this disease. It is called a poor man's disease. It happens in the rural areas where people are staying in kacha houses. Their interaction with cattle is very close. Even the cattle is sometimes kept in the house during monsoons and all that. So it's a disease which can go on for long, and if untreated can even lead to deaths. So when we came to Dumka, when I heard what is this Kala Azar, so we got serious about it. We started talking to the team, the vector disease team that is taking up the eradication drive. We got the videos involved, the whole health infra involved. And now with the Niti Aayog funds, we are coming out with this mobile medical van, which is not only going to identify Kala Azar and TB cases, but also they will be treating and they will be following up. So to have this kind of access to funds, and also to do some to come out with an initiative that is going to make a huge impact in a exercise such as Kala Azar elimination drive, is I think quite a big achievement for the district. And the same way we are making intervention, even smart classes in schools, to giving libraries in schools, for malnutrition identification, and especially in Jharkhand, when I went to a field visit to see a woman who is 7 or 8 months pregnant. She's only 36 or 40 kgs. So we know that these are the things that need to be now addressed, and we are using these funds to address these issues. So somehow Aspirational District program has brought all these into perspective for us collectors. And definitely we are not only more knowledgeable about these things, but we are also able to plan and implement, which is, I think, it is a whole set of I think document which helps us, the primer which came through. These are all really a guiding principle for collectors, and Aspirational District has given us a target for ourselves. And there is one issue that we deal with is the reporting, because you have multiple levels of reporting, you have multiple people in different departments. Many a time you see that the reports that come through are not those that are actually reflecting on the ground. So this is another major issue that we had to deal with aspiration program. But then because of the third party survey and other aspects, the team kind of knew that they cannot fudge with reports, and they have to give the true reports as on ground. We were able to address that issue. But otherwise, yes, reporting is, because there's huge figures involved. There are thousands of people involved. To get each and everyone verified is of course a big task. But we were able to do that under Aspirational District. Apart from this, I think there were many more things which for now we are not able to show in the Aspirational District program, but we were able to cater to the parameters. For example, skill development. The skill development program that happens, most of the data is entered by the department level and not at the district level. And the district is also spending, funding many training programs, which is right now not covered in the Aspirational District program, because there is no option for districts to put in figures that is being done at their level.
But of course, it's guiding us, and we are able to address the livelihood issues. We are able to address the health issues, education. When we were talking about transition, we were looking at figures. What was the figure when we started Aspirational District? What is the figure now? There's been a very minor jump, maybe 0.5 or 1%, but still there is a major gap of 6 to 7% of children not transiting from primary to secondary or secondary to higher education. And when you talk to your people about what is the reason for this, they just come out with reasons like बहुत migration होता है, people are going from here to there. But we got to the pinpoint of it ki no, you cannot just keep a reasoning like this. If you are saying that people are migrating, if kids are migrating, families are migrating, you give us a specific figure. So when that survey was done, we found nearly 6,000 kids who were yet to be admitted in school, and nobody was doing it. There's just an assumption, or I think people get caught up with the routine way of work where these things are ignored. They were not taken into consideration earlier. But now, because we have these parameters, we know what to look at. We are getting into the hindsight of it, and we are trying to address the issue. And getting 5,000 to 6,000 kids admitted to school is itself, I think, an achievement for that particular department, for those people who are working in that field. So if it wasn't for these parameters that are so clearly given to us, definitely I think it is a little difficult for collectors to get so involved or to go into such deeper issues. But thanks to Aspirational District, we are now much more aware, and we also have specific areas where we can focus upon. COVID, even during COVID, we've been regularly tracking the education aspect of things, trying to get education to the doorstep of the people. Dumka has been making news because there's a teacher who's gotten the school walls painted as blackboards, and he goes there and he teaches the kids to write on those walls. There is one more teacher who installed loudspeakers because children couldn't come to school. He went to the village, he put a loudspeaker, and kids were listening to his classes sitting at their home. So all these kind of initiatives are really coming through, and definitely Aspirational District program has not just affected the way the collectors are working, but the whole team that works with him. So we are hoping that many more things may be included or should be included, and it will empower the collectors in a much more larger way. And it's been a good experience for us, and I think that it's been a guiding principle for us. Thank you very much, Rajeshwari ji. That was extremely insightful, and along with me, I have spent some time comprehending the finer nuances of development and prosperity and of society, the structural imbalances and social and cultural inequities. And it is so heartening to hear firsthand from people like you as to how you're addressing these glaring gaps and trying to bring a large section of population who were left behind in the development story back on the mainstream. Thank you very much. We shall come back to you again. I now request the IATian amongst us, Ritesh Agrawal ji, 2012 batch IAS, who is now the DM of Bijapur in Chhattisgarh. He was earlier also assistant collector at Bastar, SDM Ramanujganj, CEO Jila Parishad in Gariyaband, Jagdalpur, Dhamtari, and Bilaspur. To his credit, I think Bijapur had ranked #1 in ADP in June 2020, and Niti Aayog and UNDP has praised Bijapur's Malaria Mukt Bastar Abhiyan, and we must credit Ritesh for that. So from being an avid science student to grappling with the finer nuances of the socio-political and cultural realities of a state like Chhattisgarh and a district like Bijapur,
How has been the journey, Ritesh, and how have you tackled this aspirational district program? Uh, am I audible? Yes, please. Thank you. Thank you, first of all, to invite me in this webinar. I totally agree with Rajeshwari, what she said about the TADP program. It has been like a guiding principle for the DCs to work around several sectors. First of all, I'll brief you about a bit about the district. Bijapur, as you are aware, is one of the most LWE affected district of the country, and about 82% of the area is forested area. So we had challenges in almost every sectors. Recently, as you told, Malaria Mukt Bistar Abhiyan was launched, I suppose, 2 years back. And since then, we have carried on 3 rounds of mass testing for malaria. Malaria is endemic for Bastar, and about 90 to 95,000 people have been tested for malaria in 3 rounds. And I'm happy to inform you that the API index, which used to be 43, has now come down to 9.2. And we are committed to get it to less than 1. For this, not just the testing, the mosquito nets were distributed to all the families. Then there were all the stakeholders, the Panchayati Raj institutions, the kids, the school-going children. They were all involved in some or the other activity of creating awareness. And so, for example, in the evening, they used to go out with the whistles to in their colonies, in their paras, and they'll just blow the whistle and ask the people to put on their mosquito nets, because generally in these areas the mosquito nets otherwise were used as fishing nets. So and I must applaud my team of the health workers, the Mitanis especially, who have done a wonderful job in creating awareness, in eradicating malaria, in changing behavior. Again, the district was ranked 1 in June 2020. So it was because the work was done across the sectors. The most challenging part of the district is the LWE problem, as well as the literacy level. So with the help of the security forces, we were able to complete around 350 kilometers of roads, connecting people connecting various villages. And once we are able to reach to the villages, we have invested hugely through the Niti Aayog funds and through SCA and other funds. We have invested hugely on creating in health infrastructure and other public institutions at the village level. So, for example, today itself, we have sanctioned 25 sub-health centers in the remotest part of the district. So, again, coming onto the roads, the most challenging part of creating roads are to deal with the LW problems, the spike holes, the everything else. So there we have a slogan, Vishwas, Suraksha, and विश्वास और सुरक्षा से हम लोग गांव वालों का पहले विश्वास जीतें, उनको सुरक्षा की एक भावना उनमें उत्पन्न करें, और उसके बाद उनके प्रयासों के साथ we start the roads work. So these are again in health and nutrition. Health and nutrition, we were able to bring down the malnourishment level from by 15% in 1.5 years, 2 years. So I think as Rajeshwari said, this program helps us to institutionalize things. So here in Chhattisgarh, and especially in the Bastar division and in my district, Bijapur, these programs have been institutionalized under the name of the CM, Mukhyamantri Sushant Abhiyan, Mukhyamantri Malaria Mukt Bastar Abhiyan. So
Yes, I think the ADP has helped us to tackle issues and address the issues very specifically. And the best thing I think is that it is the Delta ranking method. And every month we get feedback from the Niti Aayog that a particular indicator of your district is falling down. We need to look at it. So it has led to a continuous focus on those parameters. Yes, we have been able to fetch funds because by it is like a reward system where if you perform well in any sector or overall, the Niti Aayog rewards you by giving you like 10 crores. We got 10 crores once, 3 and 5. I think we have got a couple of times that has helped us in creating various infrastructures and all. And I must tell you that Bijapur District Hospital in Corona times, we performed around 400 major and something around 250 to 300 minor surgeries during the Corona period. And it is one of the best hospitals that the state has. Now, only recently, the Government of India Health Department issued the NPOS certificate, which symbolizes the global standards of services that is provided to the people. Apart from this, the connectivity, in terms of connectivity, we were able to persuade both BSNL and the private sector to install towers, which has helped us in carrying out the education programs during the COVID times. A program called Padhai Tuhar Dwar. In Chhattisgarh, it's called Padhai Tuhar Dwar, means education at doors. So like DC Dumka said, that the loudspeaker systems, the smart classes, the mobile apps, all those methods were used here also. And one other criteria, another parameter here was the dropout rates. So I'm happy to tell you that because of the Excel problems, about 123 the schools were closed down, and in past 2 years we have been able to open 56 of the schools, and we are planning to open another 50 in the coming months. So I think there's a lot in the Suposhan Dastar Abhiyan or Suposhit Bijapur. The Anganwadi workers were trained. So despite the vacancies that we have in district, we were able to involve the stakeholders from the society. We do not have much of NGO presence, so we had to go through the Samaj, the various Samaj that are prevalent here. We took their help also, and nutritional gardens were started in about 276 Anganwadis, and where the Anganwadis did not have land, we started a nutritional garden in the homes of Anganwadi Karyakartas. So these not only provided fresh vegetables, but also these were used by the cultivators themselves also. Apart from this, the supplementary nutrition is being given to the kids and the anemic women through the DMF funds. We have now, there were about 300 to 400 Anganwadis which were without buildings. So last year we did around 100 Anganwadis. This year again we will be sanctioning 100 Anganwadis more through convergence. So I think the success of the program is mainly because it is as the previous speaker said, it is measured, it is focused, and it is competitive. So all those things have led us to perform to our best, and we here are institutionalizing most of the programs so that even if there's a replacement or there's
if anybody else comes. So the program goes on, and the people are benefited, and whatever the goals we have laid out, we will achieve those goals. Thank you. That is brilliant, Riteshji. Very good to know. What tells me from your experience and examples is that certainly there is a fine blend of software and hardware. While you looked at the qualitative components of the program, you also looked at very closely at sprucing up the infrastructure, from building schools to ensuring that roads are there. And because ultimately development is so intricately linked with infrastructure development. I'm sure one of these days when I get an opportunity, it will be fascinating to come and share your experience and see on ground how it is happening. Now I'll bring in the development expert. Anish, I very proudly claim to be my junior from JNU, but he's very senior when it comes to the kind of work that he has done. He's the managing director of Transforming Rural India Foundation, which focuses on transforming life opportunities in poorest villages of India. The Tri-Action platform with 19 leading NGOs, social enterprises, and partnership with flagship programs of Government of India like Mission Antodaya, Transformation of Aspirational Districts, is the largest formal multi-stakeholder engagement in transforming villages. As usual, he doesn't like to talk about himself, but to my dear friends, audience, Anish is one of the foremost development sector experts. I say this with all my conviction, and has done some incredible work. We request him to have his perspective. His organization, Transforming Rural India Foundation, has been working across 35 districts on the Aspirational District program. Out of the 112 districts, TRI has been working on 35 districts. And naturally, Anish has a mine of information, mine of perspective to share and throw light on. Anish, over to you, please. Navneet ji, thank you very much. You have been, extremely generous, and I am undeserved, deservingly, recipient of your affection. And so I would, say that let's take it a little lightly. And I must also, record, we have worked with all the 4 district collectors on the workshop today, and we had the privilege and honor of working with them. We had placed in each of these district 2 of our young aspirational district fellows, and they had both the intellectual stimulation challenge and your generous support. So I extend my heartfelt gratefulness to all of you for guiding our colleagues, giving them an opportunity to contribute in improving the various indicators in the districts that they have been present, and very grateful to you. Sir, when I look at India, it is such a large continent-sized country that whatever you will say, actually the reverse will also always be true. The recently released SDG index, if you were to pick up Kerala with about 75 odd score, the top one to Bihar at what 52 odd score, you actually could see the entire world, at different levels of attainment of sustainable development goals. These were across 115 indicators. Very and it is in some ways we use Vasudev Kutumbakam in a different manner, but in some ways when you look at India, actually you see the bright sides and the not so bright sides of as a human race, the way we have developed or not developed. Very similar to the SDGs, the aspirational district indicators, 28 performance indicators were picked up, and these were linked to the sustainable development goals. These were across, as district collectors have been sharing, these were and across all the
areas. And in some ways, that's the true essence of when earlier you had the Millennium Development Goals and now the SDG 2030 goals. They capture the essence of what has been, achieved in this program. If I were to illustrate a little bit for our audience, if we were to call the biggest, aspiration a parent has, her aspiration would be that her child, exceeds them in terms of their attainments. That's what, economists would call intergenerational mobility. Education is a primary, and globally, studies have indicated that education is a primary mover of intergenerational mobility, and the primary education is foundational to it. And that's where the efforts, what ma'am talked about, schools in open space or loudspeaker schools, or in Bijapur, the kind of efforts at a special school for children from LWE affected families. So all these are building those foundational capacities, and these we know are the way the learning outcomes are shaped is also driven by the nutritional status of the children. And the first 1,000 days, the maternal and child health becomes very important. And that's where, if you see, as the collectors were talking about, the work around Anganwadis, the work with, during COVID times also, how the health system was made to stay functional. In some ways, this is what is, you could say, a whole of government approach. In the Aspirational District program, the 3 C's that the Honorable Prime Minister and the Niti Aayog keeps talking is competition, collaboration, and convergence. I would like to add the 2, additional C's, and that is championship by collectors. Both these C's, the championship and the role of collectors in this, has been phenomenal. And if we see the success across, we must attribute it to this championship by the collectors. We don't realize across these 112 aspirational districts, we would have close to about 280 million odd people. It's a little less than Indonesia, the 4th most populous country on the planet. So globally, if you were to see, if we as a humanity has to combat extreme poverty or attain the SDG outcomes by 2030, we'll have to, win or lose here in these aspirational districts. And that's what is a challenge and such an exciting opportunity for everyone who is involved with the Aspirational District program and in these districts, working with the district administration and with the communities there. We have seen, and again, I'll not belabor that point, this program, the way it was structured, it has shown how, when you do resource constraint, because this program didn't have additional budget. So the kind of innovation we have seen in aspirational districts, and you are right, Navneet ji, there was a study which captured, Amit Kapoor from Institute of Competitiveness at the Stanford University captured, and a number of such innovations. And later on, the UNDP program did elaborate on it much more. But these innovations were also driven by the resource constraints. The efficiency and effectiveness of public service delivery. In some ways, this whole WGA, as in, globally, one has looked at whole of government approach, Pemandu in Malaysia, and we keep talking about how they transformed a Malaysian public service delivery in a very short period of time, or in Chile or UK, they had adopted this. In some ways, our experience of the Aspirational District program on ground has been no less. In times, and I would also touch on, because all these districts also have, you have referred to the left wings and extremism, and that, as the former Prime Minister said, is the biggest internal threat since independence. I actually have looked at it in the last 3 years that we have been engaged. We started engaging in May 2021 when we entered into a MOU with the Ministry of Home Affairs. Since then, I see this as a left-wing winger excellence. And in the times of Euro 21 or Copa America, as you see a Suraj or a Neymar or a Mbappe, it created opportunities for deployment of special central assistance funds available with MHA
or any of the funds available with the district when they performed well on education sectorally or overall the funds, and the creativity in deployment of that fund showed actually a left-wing excellence in these areas. The other thing, and actually today I have written a piece on this in Village Square, that we learned, and I, after 28 years, that has been enormous learning for me, is, all said and done, and COVID crisis has brought that in a way in which nothing else could have brought it. This whole approach of working together with the government, when that's the way I look at it, is a locality or a neighborhood based approach. And in that, you see, there is two sets of community and collectives have emerged. One is these women collectives across board. For example, in Palamu, and Sir will speak about it, the way CF funds were used for the production unit for garments. Fabulous work. Similarly, in Simdega, and we know that the first block for 100% vaccination is in Sushant's district. Similarly, and had the experience of Bhag Falaria, and I can keep counting them. That's there on the website www.aspirationaldistricts.in. A whole series of public system innovations that has happened in all these 35 districts is spelled out. And the COVID response, we had the pleasure of hosting, and some of you through print, we had taken out how districts combat COVID. So I like to highlight, Navneet ji, this approach, which I think in a country which has close to 600,000 villages, and where we are looking at across these 112 districts, close to 100,000 villages, which I call stranded in terms of infrastructure, stranded in terms of services, which consequently lead to stranded in terms of opportunities for mobility. So that's what you are changing. You are building a new tomorrow. And that's how that is being done, is leveraging women collectives mobilized under National Rural Livelihood Mission. Today, you have 80 million women organized into these self-help groups across the country. At the other hand is leveraging the power of local governance institutions, the Panchayati Raj institutions. The way we have leveraged the 1.8 lakh odd the panchayats that we have across the country. Together, this working with the front line of the local district administration, and that includes, say, AAA and Asha and a Anganwadi at one end, or a school teacher in the primary school, or a JE of a rural engineering service. Together, this is what I call the CBO PRI LA Compact. The CBO PRI LA Compact is the direction in which we will be able to address many challenges. For example, in COVID, if you see, if you have to contain the infection, you have to have a mechanism of community connect. You have to have a response mechanism from the first port of call, which is the ANM or ASHA, or the Anganwadi worker, as the case may be. So unless we look at these together as a compact, and that's the experience across board. And you are right, in some places the CSOs have not been present, and that's where we have to unleash the power of community together with the power of frontline. If we are able to, and in all your districts, you have been able to show how motivation, purpose connect, and inspirations can be given to the frontline administration to provide a humanitarian leadership to the entire gamut of things that the public system engages. And we must note that poor in our country, and we talk of all these areas, 35 districts that we work with, these are the aspirational districts because they perform low on various kinds of social indicators, and they are also LWE affected in districts. Navneet, we were present here in these districts. These are marked by what? Marked by low public system delivery, low governance, and historically low investments in terms of building infrastructure or services. So if we have to unleash something different here, you will have to, the people are disproportionately dependent on government. There is no market. Market is either existent, non-existent, or existence in the form of jhola chhap doctors, if you have to talk about health, or on a talk of rudimentary and a private schools or run in shanties or what have you. So that's where we need to look at how we can use the public face of the government and make it live on ground. And that's where the outlays will translate into outcomes,
which will transform human development indices, will transform lives and give intergenerational mobility to this large section of population. As I said, together these 112 districts would be the fourth, close to Indonesia actually, the fourth largest populous country globally. And with those, and this has been enormous learning for the last 3 years for us, and we are going to take away many of these learnings to many other areas. That's what at TRI we do. We soak in all your great work, your leadership, and the insights we gather. We will translate these insights, intelligence into actionable and schemes or inputs that we engage with government at different levels. So Navneet ji, thank you very much for this opportunity. And I will urge you to look at my piece today in a village square where I have talked of this, which essentially stemmed from our engagement with TADP. Thank you very much, Navneet ji. It's been a real pleasure to be here and listening to all our district collectors. And it has been a blessing and to work with them, and very grateful for the opportunity. Thanks. Always a delight, Anish, listening to you and the kind of solid blend of experience and perspective that you bring, and you articulate it so wonderfully well. हमारे बहुत सारे दर्शक और ऑडियंस हिंदी क्षेत्र से भी हैं, और मेरी गलती है कि मैं पहले हिंदी नहीं बोल पाया, लेकिन जो हमारे दो बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, मैं अगर संभव हो सके तो थोड़ा अपना थोड़ी बात हिंदी में भी मिक्स करें तो अच्छा रहेगा. अभी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए ऐसे. Our next speaker is Shashi Ranjan ji, an IAS officer of 2013 batch, again Jharkhand cadre, and now he is the DC of Gumla. He was DC in Gumla and now serving as DC of Palamu. He has previously been posted as SDM Pakur and Chas Bokaro and DDC Dumka. Again, young officer, raring to go, and has been at the helm of affairs of driving this, like we heard from Anish, a transformational program that has ensured that those who were stranded are getting to get a new lease of life and watching development come at their doorstep. Shashi Ranjan ji, over to you, please. Yeah, good evening, Bureaucrats India and Dr. Navneet Anand, Mr. Anish Kumar, and Rajeshwari ma'am, Ritesh sir, Sushant. Good evening to all. I will talk in Hindi only. So, जैसे मैम ने बताया कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, बेसिकली उसका आउटलाइन सारा बताया. Basically, it was for the quality of life and economic development. And if you go through the 5 themes of the एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो हम लोग उसमें पाता है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. दीज आर द 5 थीमेटिक एरिया. एंड इफ यू गो इनसाइड द इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स इतने अच्छे तरीके से, इतने एलॉबरेटेड तरीके से उसमें डाले गए हैं कि अगर एक पिन पॉइंटेड इंडिकेटर पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट उसमें काम करता है तो उसमें स्पेशली अगर अपना एफर्ट डालता है तो वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं. और जो वेटेज है, आप देखेंगे वेटेज जो है पूरा हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन का, ये 80% है. सारे जो स्कोर है उसके 80% वेटेज इसी में है. और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स को अगर देखें तो एक इंडिकेटर मैं एग्जांपल के साथ देना चाहूंगा जिस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इस पलामू में और प्रीवियसली इन गुमला आल्सो वर्कड ऑन दैट इंडिकेटर. परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग 4 और मोर एंटीनेटल केयर चेकअप. तो ये एएनसी चेकअप अगर 4 बार अगर कोई गर्भवती महिलाएं करवा लेती है, इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर जितने भी इंडिकेटर्स है उसमें देखने को मिला. जैसे एएनसी चेकअप अगर कोई गर्भवती महिलाएं कराती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, अगर उसको एएनसी चेकअप करने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा या फिर हमारे एएनएम जो जाती है आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, वहां जाती है, वो चेकअप करने से
क्या होगा कि उसको जानकारी मिलेगी प्रेगनेंसी के बारे में, उसको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बच्चे का हेल्थ केयर कैसा होगा, आगे आने वाले बच्चे को कैसे कुपोषण से मुक्त करेगी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के क्या फायदे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एएनसी पर हम लोग ध्यान देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो हमारी जो गर्भवती महिला है वह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी उसका 100% इंश्योर, उसके जो न्यूट्रिशनल जो नॉर्म्स है उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। उसको अगर कहीं प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पा रहा है, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। जब एक बार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाती है तो वो बच्चा जब जन्म लेता है तो वह उसको वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन, हम लोग का जो फिगर है, अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है उसमें डाटा का काफी ज्यादा महत्व। तो हम लोगों को जब इनिशियली ये डाटा हम लोग को दिया गया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका वैक्सीनेशन 80% है, आपका वैक्सीनेशन 90% है। तो व्हेन वी जब इसको सेग्रीगेट किया, कौन सा वैक्सीनेशन, बीसीजी का, पोलियो का, कौन सा वैक्सीनेशन 100% है, तो आप इसको सेग्रीगेट करेंगे तो हम लोगों ने पाया कि बीसीजी का जो वैक्सीनेशन है इट वाज ओनली 67%। तो होल वैक्सीनेशन जब तक 100% वैक्सीनेशन तो हम लोग तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो वैक्सीन 100% ना हो जाए, यानी कि मिनिमम बीसीजी इज द इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज जब जैसे ही जन्म लेता है उसको बच्चों को 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टिकट लगाना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो माइन्यूटली जो इंडिकेटर्स है इनको देखकर हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं, कहीं एचआर का प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करते हैं। तो उसको इसलिए जो 4 एएनसी है करने इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोगों ने फोकस किया। तो वो एएनसी का जो परसेंटेज था फ्रॉम 57% इट जम्प्स टू 82-83%। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गया, वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो बढ़ गया, मैल न्यूट्रिशन का जो समस्या, जैसे आपको पता है कि झारखंड में ऑलरेडी मोर देन 42%, मोर देन 40%, 42% जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों का वो है। तो ये सारा जो इंडिकेटर्स है आप हम लोग अगर देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इस पर हम लोगों ने काम किया और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। और इवेंचुअली जो लास्ट ईयर 2020 में पलामू वाज ranked 1 and Delta ranked 1 and we have got some funds under the SCA program and from the NITI Aayog, so we are utilizing on various sectors। तो ये जो indicators है ये काफी important है और इसमें गैप्स जो है, ये गैप्स कहाँ पर है, पंचायत स्तर पर गैप है, विलेज लेवल पर गैप है। तो आगे के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इवन इन एडुकेशन में देखें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है गर्ल्स टॉयलेट इन स्कूल्स। तो एक हम लोगों को एक जो काम करने का मौका मिला कि अभी हम लोग वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द स्कूल्स वेयर द गर्ल्स टॉयलेट्स वर नॉट प्रेजेंट। तो हम लोगों ने सारे 100% गर्ल्स स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट बना दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो गर्ल्स का कवरेज, जो उसका पार्टिसिपेशन था वो बढ़ गया। फिर ट्रांजिशन जो गर्ल्स का फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास टू हायर क्लास, वो बढ़ गया। तो ये जो इंडिकेटर्स वाइज जो हम लोगों को दिए गए, नीति आयोग के द्वारा दिया गया, इसमें हम लोगों को काफी सहूलियत हुई, काफी फोकस करके इस पर काम करने का मौका मिला, गैप एनालिसिस करने का मौका मिला। उसी तरह जैसे एक्सेसिबिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पलामू इज वन ऑफ द very large district and the very LWA affected district। यहाँ पर जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। देन अगेन वी हैव आइडेंटिफाइड क्या प्रॉब्लम है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो हमारे हिली एरिया में, हिली रीजन में जो लोग रहते हैं, उनको हेल्थ एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है, उसके रीजन हम लोगों ने पता किया। तो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों को पलामू के परिप्रेक्ष्य में पता चला कि चूंकि पलामू के चारों तरफ है, काफी हिली रीजन है, काफी नदी नाले बहते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो वी मेड स्मॉल काइंड ऑफ कल्वर्ट एंड ब्रिजेस ऑल अराउंड द पलामू रीजन इन हिली एरिया। तो क्या हुआ, एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ गई। और वहां पर वहां पर एक हेल्थ सब सेंटर वहां पर हम लोगों ने दे दिया, एएनएम की प्रतिनियुक्ति कर दी, वैक्सीनेशन होने लगा। तो ये जो फार एंड तक लोगों को पहुंचाना और सर्विस डिलीवरी
का जो कंसेप्ट है एज ए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और एज ए गवर्नेंस का भी एक मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव रहता है कि फार फ्लंग एरियाज और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को अपनी सर्विस डिलीवरी देना, तो ये हम लोग कर पाए। और जो इसके कारण जो प्रोग्रेस हुआ डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और जैसा बताया कि बहुत जगह हमारे जो CSOs या NGOs हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, लेकिन इसमें हम लोगों ने जैसे बताया कि 3 C's कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कम्पिटिटिवनेस है। तो कोलैबोरेशन में हम लोगों ने NGOs के साथ काफ़ी अच्छे काम किए। NGOs those who has some expertise in some other sectors, उसको भी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर लिया और उनके साथ मिलकर भी हम लोगों ने काम किया। अभी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया कि पलामू में बेसिकली इज वेरी रेन शेडो एरिया है। यहाँ पे जो इरिगेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बार यहाँ पर जो मानसून होती है वो फेल हो जाती है और जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे है। और पलामू में एज सच कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं है, ऑल आर डिपेंडेंट्स ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। हम लोगों ने एक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो फार्मर्स हैं दे वर डूइंग ओनली मोनोक्रॉपिंग, और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होते हैं वही उपजाते थे। तो हम लोगों ने अभी जो फंड हम लोगों को नीति आयोग के द्वारा मिला, उसमें 500 एकर्स में हाई वैल्यू क्रॉप का हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें कि स्ट्रॉबेरी और बेबी कॉर्न और अदर जो हाई वैल्यू क्रॉप है उसको हम लोगों ने लगाया है, बट थ्रू द ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें मोर देन 1200 फार्मर्स हैव जॉइंड। उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो अभी ग्राउंड पे काम चल भी रहा है। ऑलरेडी जो अराउंड 150 एकर्स में इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती भी हुई है और काफी अच्छी खेती हुई है। दे हैव बेनिफिटेड वेरी वेल। तो इसको और हम लोग एक्सपैंड करने वाले हैं, क्योंकि एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो जितने अगल बगल वाले प्रखंड है, गांव वाले हैं, वो भी आते हैं देखने कर, वो अपने खेतों में लगाते हैं। और उसी तरह जैसे बताया यहाँ पर कि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ हम लोगों ने चैनपुर में लगाया है, जो 100 महिलाओं को, जो SHG ग्रुप की महिलाएं हैं, उसके लिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगा है। वो अगर उसको विजिट करेंगे तो लगेगा कि जैसे वो एक तरह से एक गारमेंट की फैक्ट्री है, और अभी तक उसका टर्नओवर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ का हो गया है। और उसी के सफलता को देखते हुए हम लोगों ने 2 ब्लॉक में और 50-50 सेंटर्स और 50-50 जो सीविंग मशीन है उसको दिया है, जो SHG ग्रुप की महिलाएं चलाएंगी। पूरी तरह से उसका जो SHG ग्रुप है वही उसको संभालती है। जस्ट वी प्रोवाइड देम द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ट्रेनिंग पार्ट। उसके बाद वही करती है, मार्केट में जाती है। और जो हम लोगों के स्कूल ड्रेसेस हैं, स्कूल ड्रेसेस के पलामू जिले में अभी इस वर्ष में करीब हम लोगों ने 50,000 जो छात्र छात्रा हैं उनको स्कूल ड्रेस हम लोग के ये जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इससे हम लोगों ने दिया है। और उससे इसके अलावा जो मार्केट से भी इसको लिंक किया गया है, जिससे कि वो रेगुलर इसमें ऑर्डर मिलती रहे। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे लाइवलीहुड में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। जैसे आपको भी पता है, अगर किसी परिवार की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक आमदनी उसको बढ़ा दें, तो उसके साथ ही हेल्थ, एडुकेशन और अदर जो भी उसकी जो जरूरतें हैं वह काफ़ी पूरी हो जाती हैं। उसमें हेल्थ का प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छी एडुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो लाइवलीहुड में बहुत सारे प्रोग्राम लिए गए हैं, जिसमें जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है हमारे झारखंड में और खासकर पलामू जिले में काफ़ी प्रिमिटिव ट्राइबल आदिम जनजातियां हैं जो हिल रीजन में रहती है, उसके लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वो अभी भी वो एक तरह से जंगल पर ही आश्रित है। जंगल की लकड़ियां काटते हैं, सूखी लकड़ियां काटते हैं, उसको बेचते हैं। तो उसके लाइवलीहुड के लिए हम लोगों ने एक लाइव स्टॉक क्लियरिंग का प्रोग्राम चलाया। ऑलरेडी हम लोगों ने करीब उसमें 50 फैमिली को जोड़ दिया। इसको और हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसमें कि उसको हम लोग उन्नत नस्ल की जो बकरी होती है वो दे रहे हैं। उसका एक सेट बना रहे हैं, सेंट्रलाइज सेट बना रहे हैं, उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी हो सके और उसको मार्केटिंग भी किया जा सके। और काफी लोग उसमें उत्साहित हैं। उसी तरह जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ कोई खास प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्दर्न पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पिपरमेंट की काफी खेती होती है। वो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि काफी लोग वहाँ पिपरमेंट करते हैं। अराउंड मोर देन 400 पीपल्स, हमारे सुशांत इज ऑल्सो देयर,
ही वाज डीडीसी हियर पलामू, जो वो भी जानते होंगे, पिपरमिंट की बहुत खेती होती है, मोर देन 500 फार्मर्स रहते हैं। तो वो मैं गया वहां पर, अब वो सारे पेपरमिंट लेकर जाते हैं बिहार, वहां से 500-600 किलोमीटर दूर, वहाँ एक्सट्रैक्शन ऑयल प्लांट नहीं है, वहां से जाते हैं पूरा पेपरमिंट वो उसका है, सूख जाता है रास्ते में, उसका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, जो ऑयल निकलता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने वहां पर एक ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑलरेडी एससीए के फंड के थ्रू हम लोगों ने वहाँ स्टैब्लिश किया है। तो ऑलरेडी अब वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और ऑलरेडी जो व्यापारी जो ट्रेडर्स है वो आ रहे हैं, उसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। तो वो एक यूनिट बनाने से जो अभी 500 फार्मर्स कर रहे हैं, नाउ दे आर, वो इंक्रीज होकर मोर देन 2000 हो जाए। तो ये, और वो ये सारा प्लांट वगैरह वही चलाएंगे, एक हमने कोऑपरेटिव बना दिया जिसके जिसके अंतर्गत वो सारा कुछ चलाएंगे। उसके इसी के तरह जैसे लाइवलीहुड के लिए क्या है कि हमारे जो पलामू जिले में जो अरहर होता है, जो तूर की दाल होती है, वो काफी फेमस है यहाँ का। तो उसको ऑर्गेनिक तूर की दाल के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी वो कंसेप्शलाइज्ड हो गया, और उसके साथ एक दाल मिल ऑलरेडी हम लोग ने स्टैब्लिश कर दी है। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें लोगों को लाइवलीहुड के साथ जोड़ा जाए, और जो यहाँ की जो लोकल वैरायटीज है, इंडिजिनियस वैरायटी है, उसको एक तरह से हम लोग बढ़ावा देंगे, और खासकर उसको जो वैल्यू एडिशन करके उसका मार्केटिंग अच्छी तरीके से हो जाए, ये काफी फायदेमंद रहता है। इसी तरह जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं जा पाती है, तो वहाँ सोलर से रिलेटेड जो वर्क होता है वो भी हम लोगों ने किया है। लेकिन सोलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आप लगा देंगे, इसके बाद वो खराब हो जाएगा, इसके बाद वो ठीक नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने वहीं पर सोलर एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया, ताकि वहीं के लोग एक तरह से वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, और वो वहीं के लोग सोलर में कहीं प्रॉब्लम होती है वो ठीक करें, गाँव में जाकर ठीक करें। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और बेसिकली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसके कारण हम लोगों को काफी इसका हम लोगों को फायदा मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं, हम लोगों को काम कर रहे, जो हम लोग रिव्यू करते हैं, मीटिंग का रिव्यू करते हैं, या गैप एनालिसिस करते हैं, इस इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के करते हैं। अभी के समय में जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, आशा वर्कर्स हैं, they also know about these indicators. They are also working to achieve their target, क्योंकि हम लोगों ने सारे पंचायत और प्रखंड वाइज जो है हम लोगों ने टारगेट फिक्स किए हैं, तो वो भी जानते हैं। इसी के अलावा एक जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है आरोग्य सहिया का, जिसमें कि जो आशा वर्कर्स हैं, इनको हम लोग ट्रेनिंग देकर और इसको इक्विप्ड कर रहे हैं। इनके पास बीपी मॉनिटरिंग की मशीन, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, और उसकी ट्रेनिंग एक ऐप के द्वारा, ताकि जो लक्षण के आधारित जो बीमारियां हैं उसको वो पहचान सके और उसका रिकॉर्ड रख सके, ताकि वो डॉक्टर्स को रेफर कर सके, ताकि वो स्वास्थ्य जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां उसको इन्फॉर्मेशन दे सके, जिससे कि उसका समुचित इलाज हो जाए। या कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, या इस तरह के पेंडेमिक के सिचुएशन में अगर इस तरह के संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं, तो उसका जल्दी से हम लोग इलाज कर सकें। ये इस तरह के कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जो इंडिकेटर्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया। और आज चूंकि ये कोविड के कारण कुछ हम लोगों का जो प्रोग्राम्स हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग उसको ओवरकम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू लिव alongside with this pandemic। तो इस तरह के कार्यक्रम में जो हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने का, और एक जो बेंचमार्क ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के द्वारा बनाए गए हैं इंडिकेटर्स को लेकर, वो उसको हम लोग अचीव करेंगे। और जो एसडीजी जो है, एसडीजी गोल्स जो है उसमें भी धीरे धीरे लोग अचीव कर पाएंगे, बढ़ोतरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि रंजन जी। मैं बताना भूल गया कि शशि रंजन जी भी आईटीएन हैं। आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। राजेश्वरी जी आज आप घिरी हुई हैं,
मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली हमारे झारखंड राज्य में 2 शशि रंजन है। इस 2014 बैच शशि रंजन इज DC खूंटी। ओ अच्छा 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 अच्छा, And he has done basically I have done my graduation from Mumbai University. I see. Okay, all right. चलिए, तो then we have another engineer, Sushant Gaurav ji, a very bright young officer, always in news for great reasons. An electrical engineer by training. He is 2014 batch, Jharkhand cadre. Prior to joining the civil services, आपने 2 साल पावर और एनर्जी सेक्टर में काम किया। आप इसके पहले गढ़वा, घाटशिला, पलामू, देवघर और अभी सिमडेगा में डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे आपको टेलीविजन पे देखने का मौका लगा था। आप एक इंटरव्यू कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर excellent vaccination drive. Being a student of Ramakrishna Mission Devghar, and what pride you bring to your family and to your friends, that being you are in your home cadre. Being a student of Ramakrishna Mission Devghar, concept of service to the people is deeply ingrained into Sushant. While detailed study of geography, which was the optional subject during his UPS exam preparation, helped him in better planning regarding natural resource management for transforming rural areas livelihood scenario. सुशांत जी, आपसे जानने को हम लोग इच्छुक होंगे कि कैसे आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और बाकी दूसरे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। ओवर टू यू सुशांत जी। आपको अनम्यूट करना होगा। सुनाई दे रही है आप सभी को? जी जी। थैंक यू सभी लोगों को और गुड इवनिंग। मैं कहूँगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस जो है आज के फील्ड विजिट से ही हम स्टार्ट करते हैं। फील्ड विजिट गए थे हमारे जिला से सलीमा टेटे, जो है वो नेशनल ओलंपिक्स के लिए चुनाई है हॉकी के लिए। सिमडेगा जो है हॉकी की नर्सरी कही जाती है। तो जब वहाँ गए तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यू कैन सी कि बहुत जगह पर एग्रीकल्चर का जो है डेप्रिडेशन फ्यूडल एज का प्रैक्टिस चल रहा है, अभी भी हल से कर रहे हैं या बहुत एक्सेलेंस लेवल पर आए तो लोग अपना बैल से कर रहे हैं। तो एंड इट इज़ अ रियलिटी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। बहुत को लगेगा कि दिस इज़ अ फिल्मी स्टोरी लग रहा है, लेकिन बट ये रियलिटी है। एट द सेम टाइम उस गांव में कोई ऐसा जगह नहीं है कोई देख के बोलेगा कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी नहीं कर सकता। तो जब आप जाते हैं यू गो देयर विथ अ विजन, यू गो देयर विथ मैनी आइडियाज़, और लोग जो है वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इनके आने से कुछ डेवलप वहाँ पर होगा। सिनेरियो जो है पोस्ट प्री एंड पोस्ट जो है वो काफ़ी चेंज होगा। बट व्हाट अ डीसी कैन डू, जब आपके पास फंड नहीं है, आपके पास ऐसा कोई बैकिंग नहीं है कि आप ये काम कर सकते, यू हैव प्लान्स बट आपके पास फंड नहीं होता, तो द प्राइमरी सपोर्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से मिला है वो ये है कि आपको फंडिंग मिलता है। सिमडेगा ऐसा जिला जहाँ पर ना इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसे एनजीओज यहाँ पर हैं, ना कोई आपके पास कोई ऐसी समिति है, उत्थान समिति, ऐसा कोई भी जो आपको सपोर्ट दे रहा हो, या डीएमएफटी का फंड है, कोई भी इस प्रकार का सीएसआर नहीं है। तो यू ओनली बैंक अपॉन सच अनटाइड फंड जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा रही होती है। और ईच एंड एवरी डीसी इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। सभी के पास अनगिनत प्लान्स और आइडियाज़ और विजन्स होते हैं, बट व्हाट इज़ द फंडामेंटल थिंग कि आफ्टर फंड के बाद ही आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ तुरंत आप हॉकी के ग्राउंड दीजिएगा जहाँ पर से भविष्य में कुछ और लोग निकलेंगे। एग्रीकल्चर के लिए आप जो सिमडेगा में पिछले कुछ सालों में जो सक्सेसफुल मॉडल्स है आप उसको रेप्लिकेट वहाँ कर दीजिएगा। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू बट ओनली आफ्टर यू हैव फंड्स। तो पहला चीज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मैं फिर से एम्फेसाइज करूँगा कि वो फंडिंग है। फंडिंग बहुत प्राइमरी इस पूरे प्रोजेक्ट के सक्सेस का एक कारण रहा है, और वो भी अनटाइड, बिना कोई बहुत कोई दिशा निर्देश या एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप इसी तरह से इसी चीज़ में कर सकते हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक बहुत अच्छा चीज़ जो उसमें है कि वो आपको इंडिकेटर्स और उसके सब इंडिकेटर्स को आपको डिफाइन कर देता है। डीसी इज़ वेरी बिजी इन डूइंग सो मैनी थिंग्स। आप एनालाइज करते हैं, आप रिव्यू मीटिंग करते हैं, आप वीसी ले रहे होते हैं, आप खुद वीसी अटेंड करते हैं सीनियर्स के। तो इन सभी चीज़ के बीच में आपके पास बहुत उतना टाइम रहता है कि आप हर चीज़ों को उतने माइन्यूटली और इतने
फाइनल नुएंसेस को आप ऊपर नीचे जाते हुए आप उस इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। यू हैव योर टीम, आप उस टीम के साथ, जैसा उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा कहा कि TRI से इन्होंने 2 ADF दिया है, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ विश्व और असीम है, ये दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन लोग के द्वारा भी है कि प्लानिंग करके ये बताते रहते हैं कि सर अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर हम लोग का ये है, इसको वर्क करने का जरूरत है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस का एक रखा है प्लेटफॉर्म जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के पोर्टल पर है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और उनके द्वारा दी गई जो आपके पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो हैं, वो आपके इस काम को और भी आसान करते हुए आपको प्लानिंग को और आपके टीम को ओवरऑल जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक राइट डायरेक्शन देता है। तो फंडिंग के साथ प्लानिंग और प्लानिंग के साथ आपका राइट एग्जीक्यूशन, ये सारा चीज जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को राइट वे में ले आता है। नाउ दैट देन कम्स द टाइमली मॉनिटरिंग और उसका फीडबैक। तो हमेशा हर महीने मीटिंग लेना, मंथ टू मंथ बेहतरीन कंपटीशन की तरह से नीति आयोग ने ये तैयार कर रखा था कि इस महीने जो होंगे जो टॉप करेंगे उनको इतना, जैसे राजेश्वरी मैडम का जो दुमका है, मैडम के यहाँ दुमका में एक बार बेस्ट किया था तो उसको 10 करोड़ तक भी मिला था। जो जिला 3rd तक करता है उसको भी 3 करोड़, जो 2nd करता है उसको 5 करोड़। तो इस तरह से अलग फंड्स भी मिलते हैं। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस कंपटीशन, कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो ये कंपटीशन का दौर जो है ये अपने लेवल पर एक DC और जो पूरे टीम है वो मॉनिटरिंग मंथली करता है, और उसके आधार पर जो पोर्टल आपको बताता है कि आपने इतना प्रोग्रेस किया है, वो आपका मॉनिटरिंग उस बहाने होता है, वो सभी 112 को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। तो वो आपका फीडबैक की तरह भी काम करता है कि आप कहाँ हैं, आपको और किस जगह में सुधारना है। तो इट कीप्स, वो एक लाइट हाउस की तरह आपको कभी भी डेविएट नहीं करने देता है। एक बेहतरीन वो अपने आप में प्लेटफॉर्म है। अब इसमें जैसे आपके पास फंड्स आता है तो कैसे डेवलप कर सकते हैं। सिमडेगा जैसे है वो रेन फेड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में, मानसून के सीजन में बहुत अच्छा फार्मिंग होती है। और आपके पास प्रोजेक्ट्स है, जैसे आप सोलर डीप बोरिंग इरिगेशन कर सकते हैं, सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं। बगल में संख और कोयल नदी है तो उससे आप सालों भर पानी आता है, जैसे पेरिनियल रिवर्स। तो उससे सोलर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट जो हम लोग लेते हैं, तो वो समय जब यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है और आप खेती लगी हुई है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय उस सोलर को ऑन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सोलर लाइट की अवेलेबिलिटी है, तो हम लोग उसको यूज करते हुए वहाँ खेती करते हैं। अराउंड 20,000 हेक्टेयर्स को हम लोगों ने कवर कराया है, लार्ज नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स इस तरह से लगाकर। और सोलर प्लेट्स को यूज करने के लिए वहाँ के ही हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, जो कि उसको मैनेज करेंगे, कभी भी खराब हुआ उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि उसके लगने से यहाँ पर पैडी इंटेंसिव, सभी देखिएगा जब कुछ नहीं होता तो लोग धान लगा लेते हैं। तो ये चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न वो अब हो गया है कि नहीं, हम हाई एंड वैल्यू अलग अलग, जैसे मान लीजिए फ्रूट वेजिटेबल ये भी लगा सकते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब 3-3 बार हमने लगते हुए देखा। जहाँ पर हम लोग लगाए थे उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जब तब देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर तीसरी खेती जो हम लोग जायद की खेती करते हैं, तो ये जायद की खेती में आपके पास आता है तरबूज की खेती, नेनुआ की और ये खीरा की, इस तरह की। तो वो भी हम लोगों ने देखा सक्सेसफुली करते हुए। इसके बाद आप तुरंत उस फीडबैक से देखते हैं कि अब इसको और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर एक शेड दे सकते हैं, शेड जिस पर कि आदमी वहाँ बैठकर अपना सब्जी को रखकर वहाँ बेच सकता है, या वहाँ पर बैठ के अपने खेतों की निगरानी कर सकता है। तो वो भी बनाने के लिए आपको फंड चाहिए। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस फंडिंग प्रोसेस, जिससे कि आप बेहतर काम वहाँ करते जाते हैं, लोगों के फीडबैक को यूज करते हुए और उस जगह पर विजिट करते हुए। न्यूमरस पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स हम लोग लिए, जिससे कि पोल्ट्री और डकरी और इस तरह की चीज़ों को हमने दिया, जिससे कि स्मॉल चेंजेस इन द लाइवलीहुड, गरीब के घर में अगर आप एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करते हुए डाइवर्सिफिकेशन जब करते हैं, तो आदमी के पास डिफरेंट एवेन्यूज होते हैं अर्न करने का, तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कराना। फिशरी यहाँ स्कोप है, चूंकि अंडुलेटिंग टेरेन है, तो बहुत सारे डैम का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ है, जिसमें कि रेजरवॉयर्स है, तो उसमें केज कल्चर को डेवलप करना या रिवराइन फिशिंग फार्मिंग को डेवलप करना। तो वो सब फंड्स के तहत हम लोगों ने वहाँ पर इंस्टॉल किया, लोगों को ट्रेनिंग दिया और ये टेकअप हुआ है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। तो उसके तहत आंगनवाड़ी में हम लोगों ने एंटी नटाल चेकअप जो होता है, जो महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का चेकअप होता है, वो 6 होना है, लेकिन जनरली 1st 2nd के बाद नहीं होता, क्योंकि इतना खराब रूट रहता है कि लोग नहीं आते हैं उतने दूर स्वास्थ्य केंद्र में कराने। उनके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, तो आंगनवाड़ी केंद्र में इंस्पेक्शन बेड लगाने के साथ उसमें पर्दा लगाना और वहाँ सीढ़ी लगाना, ताकि उनका चेकअप उस गाँव में ही हम लोग करा सकें। तो ये सब इंस्टॉलेशन भी जो है इसी राशि से हम लोगों ने करवाया।
फाइलेरिया में कंटिन्यूसली 2 साल जो है सिमडेगा जो है पूरे देश में बेस्ट रहा है और उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसके कारण से हम लोगों ने पूरे देश भर में उसका प्रेजेंटेशन भी दिया कि क्या क्या स्टेप लिया गया था कि हम लोग का जो जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि भाग फाइलेरिया भाग का भी प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर भी हम लोगों ने हेल्थ के इस एक्सपेक्ट को कवर किया जिसके लिए हमारा जिला जो है एंडेमिक था और नाम या कहे बदनाम था। हायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सभी लोग ये कोशिश में रहते हैं कि कितने अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग चिन्हित करें। अच्छा, चिन्हित करने के बाद अब नेक्स्ट काम आता है कि इनको माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में भेजना, लेकिन माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर जो MTC होता है वो इतना अच्छा नहीं है कि लोग वहाँ आना चाहते, तो उसका रेनोवेशन वर्क कराना ताकि वो बच्चों के लिए और उनकी मदर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल स्टे रहे। वो 15 डेज जब हम उनको बेहतर करते हैं, उस बच्चे को हेल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स भी किए। अब बेड ऑक्यूपेंसी जो कंटिन्यूअसली 50% से बिलो हुआ करता था वो बढ़कर अब हमारा 75 to 90% के बीच में कंसिस्टेंटली रहता है। एट टाइम्स देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑल्सो। इसके बाद कनेक्टिविटी में भी टाइम टू टाइम हम लोग मोबाइल टावर के लिए लगाकर उसको बहुत सारे कंपनी से रिक्वेस्ट करके रिमोट एरियाज में मोबाइल टावर लगाना, PCC बनाना, पुलिया यहाँ के अंडुलेटिंग टेरेन में बहुत जरूरत होता है, छोटा छोटा पुलिया कल्वर्ट्स बनाने जिससे कि कनेक्टिविटी दूर दराज के गाँव में बना रहे। HR रिक्रूटमेंट भी जो करते रहते हैं हम लोग, उससे एक पूरा टीम का जो है जो वैकेंसीज है वो भरते रहता है और उससे जो है कि हमारे टीम में अलग अलग विभाग में जो जब प्रेशर रहता है काम का तो उनको सपोर्ट मिलता है उस स्टाफ से, ग्राउंड स्टाफ से काम कराने में, बेटर एनालिसिस करने में और अगले बार एक बेहतर ऊर्जा के साथ उसी काम को और बेहतर करने के लिए। जैसे एजुकेशन में कहा जाए तो डेडिकेटेड टीचर्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। वो एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है बहुत सारे क्लस्टर में डिवाइडेड होता है, तो हर क्लस्टर में 1 या 2 टीचर्स को हमने चुना, उनको डेडिकेटेड टीचर्स का नाम दिया और उनको कुछ प्रोजेक्ट्स पर एकदम लगा दिया है। 100% गर्ल्स टॉयलेट हम लोगों ने कराया है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 100% होना चाहिए, ट्रांजिशन रेट 5th to 6th और 8th to 9th ये 2 हमारा जिंदगी खराब था, इस पर फोकस करके हर बच्चों को भेजना। रेशनलाइजेशन ऑफ पेरेंट टीचर रेशियो, ये सभी वो इंडिकेटर्स है जो नीति आयोग चाहता था कि इस तरह की जिले में बेहतर हो और हम लोगों ने फोकस करके उसको कराया। फिर डेडिकेटेड टीचर्स के माध्यम से इंगेजमेंट बच्चों के साथ मोबिलाइजेशन हुआ। जैसे हमारे स्मिथ सोनी जी एक बानो में एक टीचर है जिनको कि राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला और हमारा ये कॉन्सेप्ट डेडिकेटेड टीचर्स का और एग्रीकल्चर का इरीगेशन का, इसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड में हम लोग लास्ट 6 में है और वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोगों ने जितनी बार बताया, जितने सारे डिफरेंट प्रेजेंटेशन में बताया, तो दे एक्नॉलेज्ड कि ये अमंग द वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस था और इससे एक लार्ज स्केल चेंज पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में हम लोगों ने इस चीज़ को कराया है। कुर्डेग जो है, कुर्डेग हमारा ब्लॉक है जहाँ पर राइस के लिए वो फेमस है, पूरे बिहार झारखंड में है और उसका ब्रांडिंग करना, वहाँ एक मिल का अधिष्ठापन करना, वहाँ के डैम्स का रेनोवेशन करना, कुछ एरियाज में जहाँ लेमन ग्रास होते हैं वहाँ पर लेमन ग्रास का एक्सट्रैक्शन करना। देयर आर न्यूमरस थिंग, जैसे कि शशि सर ने भी बहुत सारा बताया इस तरह का। सभी लोग अपने स्तर से अलग अलग काम को कर रहे हैं। देयर इज वी ऑल आर ब्रिंगिंग विद सो मच कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव्स और वी वांट टू ब्रिंग अबाउट सो मच चेंज एंड दैट टू इंटीग्रेटेड वे में। लेकिन ये सब जो कंटिन्यूसली यहाँ फंड्स जो 3-4 साल से आया है उसी पर ये पॉसिबल हुआ है और ये आते भी रहेगा, तो वी कैन सस्टेन वॉट एवर द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन। इसमें एक चीज कहेंगे कि ये सभी चीज का एक बेस इफेक्ट था, तो जो बेस लेवल था वो सिमडेगा का रिलेटिवली बहुत कम था, जिस कारण से कि सिमडेगा आज ऑल इंडिया रैंक 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हुआ है। वो इसका रीजन ये भी था कि हम लोग बहुत उस लेवल पर थे जहाँ मिनिमम चीज जो बेस इफेक्ट होता है उस कारण से हम लोग बहुत हाई लेवल पर अचीव कर पाए हैं। वी वांट टू कंटिन्यू इसी तरह से ये इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जीक्यूशन, फीडबैक और इंडिकेटर्स का एक बेहतर जो एक मापदंड हम लोग को दिया गया है इस सभी चीज को लेकर, और एक्सपीरियंस शेयरिंग को लेकर जितने भी हम लोग सभी DCs का है उनके बुकलेट भी आते हैं नीति आयोग से कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यू कैन चूज एनी वन एंड इम्प्लीमेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट। जो सूटेबल होता है हम लोग पिक करके उसको लगाते हैं। देयर इज सो मच थिंग दैट दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कैन डू टू अ डिस्ट्रिक्ट। इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू। Thank you very much, Sushant ji. Now I request Rajiv Ranjan, my colleague and editor of Bureaucrats India, to please raise some questions from the audience. Rajiv ji, you are there?
In the meanwhile, thank you, Ritesh ji. You have answered most of the questions, but for the benefit of our other friends, I think there is a question on which Ritesh ji has already answered. If anybody else is wanting to, so I'm getting some personal questions. So, how long is the program going to continue? It has completed 3 years now. Is there a timeline fixed? And are we likely to see this model being replicated? There are brilliant examples like Anis, all of you shared, and we have read about the UNDP reports, how acknowledging some of the best practices from Meghalaya to Assam to Bihar, Chhattisgarh. Now, are some of these going to be replicated? Is there a deliberation on that? And secondly, what is the time frame of this entire program? Sir, Honorable PM had announced the program to, with his vision of New India with 75th year of independence, 2022. So that's how he had articulated it. Already, sir, there is the progress as we keep talking about India's commitment on SDG 2030. And we look at the SDG numbers that Niti Aayog just published. तो ये ऐसा लगता है कि सर यह प्रोग्राम ने एक एसडीजी अटेनमेंट में तो एक एसडीजी के तरफ हिंदुस्तान को बढ़ने के लिए न केवल प्रेरित किया है, उसको है ना एसडीजी के आउटकम्स को अचीव करने में भी मदद किया है। तो यह प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत सारा सीख दिया है, जैसे मैडम और कलेक्टर सर लोग बता रहे थे। तो यह ऑलरेडी नीति आयोग ने कई जगहों पर इसको इंटीग्रेट किया है और हम लोग जहां जहां सरकारों के साथ काम कर रहे हैं हमने देख रहे हैं इस तरह का इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म, जैसे सिमडेगा का ही सर वहां पर एक हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फेलोज प्लेस किए गए हैं काम करने के लिए HSTF। तो यह जो मॉडल है कि आप इंटीग्रेटेड तरीका से एक विकास के मानकों को देखेंगे, डाटा ड्रिवन करेंगे। मैडम जब थी पहले जिले में तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिकेटर्स को ब्लॉक स्तर पर ले जाने का कोशिश किया। कुछ जगह पर लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने पंचायत पर इसी इंडिकेटर्स को ले गया। तो डाटा ड्रिवन गवर्नेंस का एक जो पूरा फ्रेमवर्क बना है और चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल, और उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने इनोवेट किया है। ये कई जिलों में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे थे कि पूरे ना राज्य में ही इस तरह का ना एक हर जिले का जिलेवार इसी तरह का चैंपियंस ऑफ चेंज टाइप कोई पोर्टल है ना खड़ा किया जाए। कई जगह लोगों ने डीएमएफटी के पैसे से है ना ऑलरेडी एक्सटेंड किया है। सिमडेगा में भी है ना बात हो रही है सर, गढ़वा में हुआ है, पलामू में भी हुआ है। तो कई जगह सर ऐसी बातें फंड से ही हम लोग करा दिए, जायका से तो ऑलरेडी कई प्रपोजल्स आए हैं सर। नंदुरबार में ना इसी मॉडल पर सर है ना एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने ना जायका का फंड से किया है। तो जायका का सर हम लोग पिछले साल एक बात कर रहे थे दिसंबर में, जायका के जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, उन्होंने ये कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ जायका फंड्स। वो एसडीजी के लिए उन्होंने 1500 करोड़ के लगभग, जब प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जब जापान गए थे तो उन्होंने उस समय कमिट किया था। तो ये बोल रहे हैं कि एसडीजी अटेनमेंट के लिए ग्लोबली इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ द फंड्स, क्योंकि वो इंसेंटिवाइज कर रहा है। द होल फोकस ऑफ द जायका सपोर्ट that is directly going to the district and it is going as an untied fund to the district, as sir was saying, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर एंड ओवरऑल उसके लिए जाता है और आप उसको उसी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का बहुतेरे है ना आप उदाहरण देख सकते हैं जो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे ब्यूरोक्रेट्स इंडिया पे, फीचरिंग डिफरेंट डीसीज, इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स बाय अनीश, और आप लोगों से बात करके। राजेश्वरी जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, एक मुझे व्हाट्सएप पे आया है। व्हाट्स बीन द रोल ऑफ बिहेवियर चेंज communication? You know, I'm a student of sociology and this personally is a question that is closer to my heart. What has been the role of behavior change and behavior change communication? How has the district administration gone about achieving this?
Thank you, sir. I also had sociology as an optional subject in my Okay. preliminary and mains, so it's close to my heart as well. So definitely, I think communication itself is a major aspect for us, especially when we are working with certain communities such as the primitive tribal groups here in Dumka, where we have Pahadia groups. Almost we have a huge population of Pahadia groups. We have 45% of tribal population plus Naxal affected. So it is that concocted mix of negatives that kind of hinders administration and governance in these areas. And bringing about behavioral change itself is a challenge. We've seen that in Swachh Bharat Mission, where in my previous district, yeah, it was the first district to be ODF. We were recognized as champion district, etc. But yes, when it comes to usage, when it comes to bringing about ownership among the people, there's a question that's been posted, I think, on the group chat where somebody is asking, okay, how do we ensure that these are sustainable, like kitchen gardens, who is going to maintain, what about the manure, the fertilizers, etc. So unless and until that ownership is built at that level, once the public understands that this program is for them, these things that are being done is for them, it is our job to convince them, to communicate that to them, and then maybe if we are lucky, we will see that behavior change over a period of time. So communication, and especially when it is data driven programs, we have to be very specific which are the key nodes that we need to pinpoint to the public, and what are the kind of behavior that we want to see. For example, Sushant raised, I think it was Shashi or Sushant who raised this issue of, about getting children, malnourished children, to the MTC. It is a huge task. It is a huge task even today. Not even 50% of the beds are occupied because the mothers have other kids to take care of at their home. They cannot leave home for nearly a month. It's a month-long treatment program for the child. Once they come to the hospital, they get 100 rupees per day allowance. But then, small issues like, who's going to take care of my other two kids? Who's going to take care of the elders in my family? I have a whole house to look at, to take care of. Many a times the hospital setup cannot cater to the needs of the attendant, their fooding and etc., etc. So that also deters them from keeping the child for the full month. And ultimately, we are also like, chalo, at least 15 din to aaye, ek hafta to aaye. So these are issues that cannot just be addressed with one single shot. You need to come up with multiple alternatives. Now we are trying to see if these centers can be, probably if there is a panchayat which is highly affected with malnourished children, then maybe we need an MTC center at that level, so that the people find it easy to keep their child in the treatment center for a month-long period. So how do we communicate? These are very intricate issues, but for them, each and every initiative that we take has a very high level of impact. Many a times positive. If we do it, then it's positive. But we don't understand that अच्छा हमारा ये initiative से उन पे क्या affect होने वाला है. It is not easy for them to just accept what we are framing for them, because they have their own lives to take care of. They have their, maybe a malnourished child is just one single problem, but they also have to take care of the livelihood. They have to take care of other issues. If there is no water in their house, it is these people who get water from God knows where. It may take them an hour, 2 hours to just provide water for that family for the day. So if we expect that one adult will come and sit with the child for a month-long period, it's not going to happen. And this is just a small example that I'm giving. So behavioral change, I think it is a very tough thing. And first of all, we need to create awareness why this is important for you. Why do you need to do this? Move out of your comfort zone, and just for a period of time, you have to do this so that you can have a better future for your child, or whatever issue that we are addressing. But yes, communication, we are now, because we are well informed, that itself is a I think big thing for us. We know that things are interrelated. We know that malnourishment ka ye hua, why ANC is important. We've tried to correlate ANC with low birth weight. If
if a person has not gotten the first registration of ANC done, then we know that there is a huge risk of that child being born as a low weight baby. So now we are correlating things, we are informing them, we are working a lot on IEC, but yeah, it's a tough job to do. And but we have the content, we have the stories to share from the other districts, from our own experiences, and definitely that change is happening. It will take time. It's not easy because we are looking at their one aspect of thing, but they have many more aspects in their life that is going on at the same time. Why Dumka administration has taken up Kala Azar as an issue? Because it's debilitating for the whole family. So there are many interrelated other issues that we fail to see. For us, it's just that beneficial, identify, bring him to the center and things will be right. It doesn't work that way. There's a lot of hard work going on at the ground level where the SIF, it happened during vaccination. The first round, this district, in a day, we did nearly 17 to 18,000 vaccination. I see. And then in the second phase, it was tough to even reach 300, 400 because people started getting fever. There were 1 or 2 cases, very old, old age hua tha, they died due to natural causes, but people linked it with vaccination. So how are we going to bring these back on board? So there's a lot of communication happening. So behavior changes happens both ways. Something Right. happens, it either affects them positively or it affects them negatively, but it is going to affect them. Correct. So that is something that is very interesting and challenging for us, and definitely I think it's a very important point, behavioral change in the whole setup, especially on an individual basis when you're talking about a particular person, a child malnourished or a pregnant woman who is malnourished or somebody who is really needing that assistance. And also there is one at the community level where you're seeing toilets built but nobody wants to use them. They're still going for OD and stuff like that. And vaccination, it's an individual, but again we are giving it a community approach, that you do it for the society, you do it for your family members. So there are different ways we are trying. It's all a try and tested methodology that we are doing. Many things work, but sometimes things don't work. But yeah, Aspirational District has kind of given us also I think how we are able to convince people, and the kind of command that officers or field workers can have on people. I think we can judge it through the way we are seeing people change. Right. I'm sure you are good at communications. You are one of the most popular IAS officers on Twitter. We'll keep it for another day, how you're using Twitter to galvanize public opinion, to mobilize people. Wonderful. Thank you so much, Rajeshwari ji, on that. There is a question by one Alok Arunam, and he's asking, the program has definitely promoted local innovations. Are there systematic policy changes that's required? Any recommendations? Ritesh ji, would you like to take this question, please? Yeah. In terms of local innovations. Policy changes required. I think I'll go not just about the local innovation, but as the policies that we have right now. First of all, because our district is one of, again, the worst LWA affected, and lots of villages are yet to be connected through roads. A lot of work has already been going on. So one thing, there has been a change in the policy of rural RRP roads, rural road projects, which is done in LWA areas, RCP LWA program. So there are earlier the width of the roads used to be 10, now it has been reduced to 7.5 or something. The thickness has been reduced. So all those kind of policy changes are required, which we have also communicated to the MHA and the concerned ministries. Through local innovations, a lot of things are happening, and most of the things here in Chhattisgarh, the good part is that anything that works in one district, the state is very ready and keen to adopt it across the state. So institutionalization of most of the local innovations gets done at the state level also. So again, like for example, like PC Sakhi,
Us was a district only in last 2 years we were able to establish 51 mobile towers. So before that, the condition of the internet connectivity and telephone connectivity was very poor, and the internet and the telephone connectivity gives an exposure to the population of the place. It connects the young kids, the youth of the district to the whole of the world. And apart from that, I was talking about the internet and the telephone connectivity because for financial inclusion also, we had opened PMJDY accounts. We have done lots of things like that. The Trinity Jam, Jan Dhan account, Aadhaar, and mobile. So that part was missing. When the mobile connectivity came, the Aadhaar came. Now, to make a transaction, we need the banks. So banks, mostly in such districts, I'm sure in other districts also would be the same case. The banks would be available only in the district headquarters or maybe at the block headquarters. But in the rural areas with a large expanse of the district, we do not have banking facilities. So the model of banking correspondents, BC Sakhis, these were bank Sakhis. These have been explored. And about 40 to 50 young girls were trained in making financial transaction. So all these practices are there, as one of the panelists said, that lots of innovative things, lots of brainstorming are being done at the district levels in every district. And it's only about the availability of the funds, the surety of the tenure, and all which affects the implementation of the program. So I think I have answered some part of the question. Right. Thank you very much, Ritesh ji. ये क्वेश्चन मैं शशि जी से पूछ सकता हूँ. ये डेवलपमेंट पार्टनर्स ने किस तरह का रोल प्ले किया है in supporting the district administration for this? जैसे बताया कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है थीमेटिक बेस्ड है, वी हैव बहुत सारे इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं. तो डेवलपमेंट पार्टनर्स अगर मिल जाते हैं, अगर साथ में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो काफ़ी इसमें सहूलियत होती है. इसमें कुछ जैसे हम लोगों को CSR के थ्रू भी कुछ फंड्स मिले हैं जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर है. वो कुछ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स दिए आंगनबाड़ी सेंटर्स के, उन्होंने किया है क्योंकि उनकी भी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं CSR के थ्रू, और जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर वो एक जो ट्रस्ट होता है, एक जो बिलीफ होता है उसके कंपनी में, वो भी बढ़ता है. तो CSR एक अच्छा फंड हम लोग को मिला है खासकर पलामू डिस्ट्रिक्ट में. और इस तरह का जो अप्रोच है, हम लोग वी आर कंटिन्यूसली सेंडिंग आवर प्रोजेक्ट्स टू द डिफरेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स आर लाइक, लोगों ने बाहर भी इवन की वी हैव रिक्वेस्टेड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अन्य लोगों को भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजे. तो ऐसे अगर डेवलपमेंट पार्टनर्स आते हैं तो हम लोग को प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है. और जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जो इम्पॉर्ट ऑफ फॉर वांटिंग जो फंड्स के रिक्वायरमेंट के कारण नहीं हो पाता है, तो वो हम लोग क्लब करके कर सकते हैं. हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी लिए हैं कि जिसमें जो ह्यूज काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट थी, जो हम लोगों ने कुछ अपने SCA फंड से भी लिए हैं, कुछ यहाँ के जो लोकल जो NGOs हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, और कुछ हमारे CSR फंड भी, तो उनका काफ़ी अच्छा रोल होता है. और जहाँ फंड क्रंचेज होता है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है. और खासकर ऐसे जगह में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जो SCA के फंड नहीं आते हैं, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इसकी महसूस होती है. अदरवाइज जो SCA के फंड जो नीति आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिए जाते हैं, वो एक तरह से काफ़ी पर्याप्त होता है. लेकिन जहाँ पर वो नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ LW इफेक्टेड नहीं है, जहाँ पर फंड नहीं आते, तो वहाँ डेवलपमेंट पार्टनर्स आना और उनके साथ काम करना डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है. और वो जो गोल्स रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स रहते हैं, उसको
आउट करने में काफी थैंक यू शशि जी, धन्यवाद। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, पोज करूंगा सुशांत जी को। आलोक जी का ही प्रश्न है ये। Our development approach has continued to rely on highlighting best practices rather than informing problem-solving process. How has this aspirational district program contributed to problem identification, solution, and feedback? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक अनटाइड फंड दिया है। यू हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू हैव अ टीम, यू हैव प्लान्स। अब आप जैसे ही इसको ग्राउंड पर उतारना शुरू करते हैं तब आपको पता चलते जाता है कि किस किस स्टेज पर कहाँ प्रॉब्लम्स आता है, बिकॉज यू हैव अ टीम विच इज प्रोग्राम्ड फॉर डूइंग द स्टेट और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको कि वो वेल ट्रेंड है कि उस हिसाब से काम करना। बट दिस इज वे टू डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स को हम लोग टेकअप कर रहे हैं। वैसे डिपार्टमेंट जो स्टेट के प्रोजेक्ट्स के इतने आदी हैं इंडिकेटर्स और वही पुराने आवंटन या अलॉटमेंट का, उनके पास जब इस तरह के अनटाइड फंड्स को हम लोग देते हैं तो तब आप उनके एग्जीक्यूशन को कराते हैं, तब आप फील करते हैं कि हाँ कितना डिफरेंट है। उससे जो फीडबैक आपको आता है फिर उस पर आप रीप्लान करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस सभी के लिए, टीम के लिए। और शुरू का जो लर्निंग प्रोसेस से हम लोग चेंज करते हैं, आप देखिए कि पहले 1-2 साल में जो चेंज है बाय द थर्ड ईयर जो हुआ है वो कहीं वे टू एक्सेलरेटेड प्रोसेस में होता है। इसका मतलब है कि वो टीम जो है वो प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं। प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम लोगों ने किया है। और जैसा कि अनीश जी भी ने कहा है कि जो सर भी कह रहे थे कि जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स होते हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को रीड करते हैं, क्योंकि दे आर अ थर्ड पार्टी। वो बात में कन्वे करते हैं, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन डीसी को आप कहेंगे कि इस तरह सर गलत हो रहा है, बट बहुत सटल तरीके से वो आपको कहते हैं कि सर इस जगह पर ये पॉइंट पर जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो सर बहुत अच्छा आउटकम होगा। तो आप तुरंत अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ इस चीज़ को ऐसे चेंज करना है। तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो कंटिन्यूसली होते रहता है। आपके टीम जो है वो अपना एक फीडबैक लर्निंग करता है। तो कुल मिलाकर इससे जो है वो आउटपुट बहुत। Thank you. And the last question to the expert, मेरा personal question है अनीश जी से। अनीश जी, I also come from a small town in Bihar called हाजीपुर। हम लोग वहीं बचपन गुजारे। Fortunately we came out, went to some of the finest institutions. और उस जमाने में जब हम लोग छोटे थे उसमें कालाजार, मलेरिया, टिटनस, पोलियो, इस सब बीमारियां थी। और बाद में हम लोगों को जब हम लोग दिल्ली आए तो हमारा नजरिया बदल गया। मुझे लगा कि एक फ्रॉम सबाल्टर्न वी स्टार्टेड लुकिंग टॉप डाउन एंड वी थॉट द होल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड हैड वैनिश्ड। Do you find it, this is a slightly loaded question, and that is why I will refrain from posing this to one of the bureaucrats. Isn't it sad that 7 decades post-independence, we are still struggling to address some of the basic fundamental issues, rather than looking at making a leap towards something else, to bigger goals? I think we are still struggling with these fundamental questions of existence. Your perspective, Anish. तो सर मैं ना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ रिफ्लेक्शंस मैंने ये प्रश्न पूछता रहा कि कई समय से पूछता रहा हूँ कि गरीब गरीब क्यों हैं, है ना। तो जब मैं पहला बार, मेरा भी गांव, मैं मुजफ्फरपुर में ही पला बढ़ा, फिर दिल्ली आ गया, तो बगल में ही था आपके, और अपन साथ में ही थे हिंदू कॉलेज में। मैं उसके बाद जब पहला बार जब गांव गया था तो मेरा एक अनुभव था, जब मैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था तो मैं हेमलकसा बोल करके एक गांव है, और ये भामड़ागढ़ में है, जहाँ पर प्रकाश आमटे और उनकी है ना पत्नी काम करती हैं। और वहाँ ना भाड़िया ट्राइब्स हैं, उनके साथ है ना वो लोग मिल करके ना भाड़िया ट्राइब्स के साथ काम करते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर और अन्य मुद्दे पर। तो एक्चुअली मेरे को वहाँ पर एक ये लगा कि जरूर ऐसा कोई काम किया जा सकता है, अगर हमने कुछ प्रोफेशनली कुछ पढ़ाई लिखाई किया है तो समाज को वापस देने का एक मौका मिल सकता है। तो वो मेरा एक पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव हुआ जब मैंने प्रधान ज्वाइन किया और फिर मैं जब गांव गया
तब मैंने देखा। तो मैं एक जरूर आपने जो बात कही है कि, और मैं जब मुजफ्फरपुर में ना थोड़े दिन पहले गया था, वो एक अपना स्मार्ट सिटी भी है, मैंने देखा कि वो जो ड्रेन है, और हमारे पिताजी प्रोफेसर थे तो वो प्रोफेसर कॉलोनी में है ना हम लोग रहते, तो प्रोफेसर कॉलोनी के ठीक सामने है ना वो ड्रेन जा रहा है, और वहां पर, और चूंकि बहुत सारे प्रोफेसर वहां रहते हैं, बड़े नामी गिरामी है ना प्रोफेसर लोग भी रहते हैं, हर तरह का ही है ना, सोशियोलॉजी से लेके भौतिकी विज्ञान तक भी पढ़ाने वाले, उन लोगों ने अपना लेकिन सीवेज का लाइन है ना उसी में ड्रेन में डाल रखा है। मैंने सोचा कि 5000 साल पहले अगर बोलते हैं हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो हड़प्पा था, वहां भी ड्रेनेज लाइन, माने ड्रेनेज लाइन के लिए तो वो जाना जाता था, कहाँ चला गया वो सभ्यता, जहाँ एक सिंपल इस तरह का भी बात है ना अपन आज का तारीख में नहीं कर पाते हैं। तो एक इसका संदर्भ अगर अपन को जरूर समझना चाहिए कि हम लोग एक अनलाइक अमेरिका विच इज ए न्यू कंट्री, इन सम वेज न्यू इसलिए हो गया है कि बाकी जो इंडियंस जिसको बोलते हैं उसको रिजर्व्स में उसने पुश कर दिया है। आपने जाइएगा एप्लेशियन माउंटेन्स में, वो रिजर्व एरियाज हैं, जैसे अपने शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 का एरिया है, वहां पर भी वैसा ही उन्होंने बना रखा है। हमारी लेकिन जो सभ्यता है, अनलाइक एनी अदर सिविलाइजेशन, चाइना इज अनदर सिविलाइजेशन, इसका एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल आर्क है, और ये जो सिविलाइजेशनल आर्क है, इस सिविलाइजेशनल आर्क में एक प्रकार से समाज का ढर्रा, समाज की संरचना एक प्रकार से हुई है, और उसमें दो सेगमेंट, जैसे मैं खास करके है ना, ये जो हमारे यहाँ पूरा जो वर्ण व्यवस्था की बात अपन करते हैं, और ये थोड़ा सा पॉलिटिकली है ना सेंसिटिव मामला है, तो मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करूंगा बोलने के लिए। और जिस समय हमने बोलते हैं लोग गुप्तकालीन समय से कास्ट, एंड देयर आर डीएनए एविडेंसेस नाउ कि वो सॉलिडिफाई हो गया था, जो आप बोल सकते हैं इंटरकास्ट मूवमेंट सॉलिडिफाई हो गए थे, और इंटरगोत्र मूवमेंट सॉलिडिफाई हो गए थे। अब आपने अगर उसको देखें, और फिर हमने जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम देखे, तो एक तो समाज में एक जड़ता आती गई, और लैंड रेवेन्यू का सिस्टम आज की तारीख में भी आपने देखेंगे, दिल्ली सल्तनत ने जिस समय जो कुछ शुरू किया, उसके बाद टोडरमल ने आकर के जो कुछ थोड़ा बहुत किया, और परमानेंट सेटलमेंट का एरियाज, तो अभी भी आप देखिएगा परमानेंट सेटलमेंट के एरियाज जहां से अभी हम सब लोग है ना बात कर रहे हैं, उसका एक अलग अपना है ना स्वरूप है। आदिवासियों का एक अलग ढंग से हम लोग है ना देखते हैं, मूल निवासी बोले, आदिवासी बोले, जैसे भी करके आप बोलना चाहिए, आपने देखिए उनका किस तरह का समस्या। मैंने गोड्डा में काम किया था मैडम, और मैं दुमका में भी, सरैया हाट में मैंने बहुत दिन है ना रहा था, 1-1.5 साल तक मैं था वहां पर सरैया हाट में भी, वहीं पर मैं बगल में पीएचसी के है ना रहता था मैडम। तो मैंने एक सोचता हूँ कि समाज का जो रचना है, और जो मूलभूत रिसोर्स का जो स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार से ना हमारा जो समाज है, हिंदुस्तान जैसा कोई समाज नहीं, जैसे कास्ट सिस्टम, द क्लोजेस्ट पैरेलल इज ब्राजील, जहां पर है ना वो रेशियल है ना, वहां सेग्रीगेशन होता है, वहां 28 एक ऐसे हैं, वो है ना जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो है ना अफ्रीकन लाए गए थे स्लेव जैसा, और जो वहां पर स्पेनिश पॉपुलेशन, पुर्तगीज पॉपुलेशन के साथ जिस तरह से इंटरेक्ट किया था, तो वो एक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट्स है समाज में, तो एकदम अलग ढंग से है। तो 70 साल कोई नहीं है, 70 साल के समय में ही आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है टोकाविले की, अमेरिकन डेमोक्रेसी पर। तो अलेक्सिस टोकाविले के जो किताब है ना डेमोक्रेसी का, लगभग 70 साल के बाद ही, अमेरिका ने ना 76 में आजाद हुआ था, 4 जुलाई अभी आने वाला है, और ना 1830 के आसपास में ना टोकाविले ने वहां विजिट किया था। आप देखिए उनको किस तरह से ना देखा था, तो एक बड़ी मूलभूत चीज उन्होंने निकाली थी, एंड ही डिड टॉक अबाउट दीज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोसाइटीज, एंड ही सेड हाउ डेमोक्रेसी हैज शेप्ड देयर there are few things, and it was in a racially segregated society even then, but few things that he talked about is very fundamental to way we have developed as a society. He said that एक इंडिविजुअल, एंड दैट्स देयर इन द बिल ऑफ राइट्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन आर बॉर्न फ्री, एंड दैट्स व्हाई उनका देखिएगा परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज पर परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। हमारे संविधान में परसूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, उनके यहाँ है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए इससे हुआ क्या, जो उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जिस तरह से समाज की संरचना की, उसमें जिस तरह से जो पैटर्न क्लाइंट और सब्जेक्ट और मास्टर का रिलेशनशिप था, 47 में हम आजाद हो गए, 50 में हम गणतंत्र हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, अब फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, एंड लिबर्टी,
अच्छा, अब इसको आपने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हम लोगों ने नागरिकता पर बहुत कम ध्यान दिया है, और खासकर ऐसे समाज में जहां पर इस तरह से जड़ता 5000 साल से चली आ रही है, अलग अलग तरीके से। मनुस्मृति की जड़ता एक अलग तरह की जड़ता है, लैंड रिसोर्सेज में एक अलग तरह की जड़ता आ गई है। उसमें जहां हमने नागरिकता पर जितना कम ध्यान दिया है, तो वो एक सिटीजन हुआ नहीं एक ढंग से। एंड दिस कैन बी कंटेस्टेड, बट दिस इज माय रिफ्लेक्शन, एंड फ्रॉम वर्किंग इन द विलेजेस आई रियलाइज द नोशन ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ एंड नीड्स रिविजिटिंग, what it means to be a citizen in a liberal democratic republic. And all these three words are very different. Republic means something very different from democracy or an liberal polity. अच्छा, इस संदर्भ में जब आपने देखेंगे ना, तो 70 साल कुछ भी नहीं है साहब, यही मेरा निवेदन है। दूसरा मैं एक और आपको संदर्भ देता हूँ, और ये आजकल है ना, आपने अगर पढ़े होंगे इनको, है ना, बहुत अच्छे से लिखते हैं, हमारे बड़े फेवरेट ऑथर हैं युवाल हरारी। उन्होंने ना जो सेपियंस किताब लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने लिखी है कि समाज की संरचना उन्होंने 3 तरीके से, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी का जो रिलेशनशिप है। अब आप देखिए कि धीरे धीरे करके इंडिविजुअलिज्म बढ़ता गया और स्टेट का रोल हर चीज में आता गया। जैसे है ना, अब फैमिली के इंट्रा फैमिली इश्यूज में भी स्टेट का रोल आने लगा, और ये सब अलग ढंग से हमारे समाज में बना है। तो 70 साल कुछ नहीं है सर, हम लोग और आगे देखें। और एकदम सही बात आप कह रहे हैं। आज भी जैसे मैं गया था, मैं गोड्डा में काम करता था, मैं देवघर जाके देखा, वही एक बड़ी अच्छी दुकान है घंटाघर के पास, जिसके हम सब लोग जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। अभी भी वहां ड्रेनेज लाइन है, उसी के ऊपर उसने क्या किया है, डोसा का काउंटर लगाया हुआ, नीचे में ना वॉट एवर इज गोइंग, एंड वी आर मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बिल्ट इम्यूनिटी, गॉड नोस। बट दिस इज देवघर, बाबा धाम में अभी भी वैसा ही चलता है। मैंने जब गया था 1994 में मैं गया था पहला बार उधर, तो भी वही था, और अभी मैं थोड़े दिन पहले जाके देखा वैसा ही सिस्टम, सब चीज। ना तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बदलता है, ना वो बदलता है। तो एक सिविलाइजेशनल आर्क में 70 साल सर कुछ नहीं है। हम लोग विश्वास रखें, नागरिकता पर ना जोड़ दें, एक एक है ना इंसान का, है ना, इफ वी कीप है ना बिलीविंग इन ईच ह्यूमन वैल्यू, each human being has a value, and keep reinforcing that, which in aspirational district all our and we have learned through this process, our district में कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बताए, इतने enormous examples हैं। और ये तो कुछ ही उदाहरण अपन ने देखे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी तरह से तो है ना समाज तरक्की करता है, देश तरक्की करता है सर। I don't know whether I answered or not, but let's be very hopeful. Absolutely, you answered. I am a perennial optimist and always believe in the goodness of human being and our government. Strong belief, a true Yes, democrat I am, and I truly believe. Salute to all the aspirational district collectors. You are truly inspirational. And what पिछले 2 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला, और आप लोगों ने इतने संयम से और अपनी बातें रखी, आप इतना वक्त निकाला। वी आर सो वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम Bureaucrats India. Like I said, Bureaucrats India is an independent initiative born out of a passion to drive positive conversation, positivity, spread positivity, and celebrate good governance stories. I'm sure we shall keep getting inspired and keep getting youngsters like you to inspire us to continue our mission of spreading the good. Thank you very much. Thank you, my dear friends who joined us on Facebook, on Twitter, on Zoom. We shall be back again sometime soon with another edition of Bureaucrats India webinar. Thank you very much. Thank you very much. It was very, very inspiring. Thank you, sir. Thank you. Madam. Thank you. Mr. Anish should visit again Saraya Hat. I will, ma'am. And I will. शिकारीपारा, सरैयाहाट में मैंने रहा ही मैडम, वो पूरा बरमाड़ा का ना मैंने। He's saying when you go now, you'll find a change. Yes, yes, ma'am. Definitely, I know and I know. बहुत सुंदर है ना दुमका, और हमने वहीं से मैडम गांव में जाना, गांव में जाके लोगों से बात करना सीखा है मैडम। नहीं, it's very beautiful during the monsoons. अभी पूरा हरा भरा होगा, रोपनी के बाद तो it's like it's really something one must see. आप हम लोगों को भी बुलाइए राजेश्वरी जी। बिल्कुल बिल्कुल, most welcome, most welcome. We'll be happy to host you. And अभी लगातार 4-5 दिन से कोरोना पॉजिटिव केस भी 0 आ रहा है। Wonderful. एक आया है बस, but we've handled COVID also pretty well. So we are comfortable now. हाँ, so we've started. अभी जैसे सुशांत ने कहा, शशि ने कहा, things have taken a back step,
because of COVID, but now I think we are going to see progress because आपके आपके यहाँ सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाना होगा वैक्सीनेशन का? नहीं हुआ होगा तो यहाँ करा देंगे, चिंता नहीं है. Okay. Thank you, sir. Thank you for calling. Thank you very much. Thank you so very much. much. Thank you, Sweta. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Anish. Thank you, all of you. Bye-bye, sir.